And well, let's cut across live to New Delhi, where the Congress is releasing its poll manifesto for the upcoming Lok Sabha elections. गवर्नमेंट जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने मदरसा बोर्ड बनाया है, बोर्ड जिस स्टेट नहीं है उसमें बनाया। तो मैं रिक्शा चला रहा हूँ। हमने पिछले में जो सरकार हमने कोशिश की घर के नीचे हम एक फर्श डालें, मनरेगा अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, हमारी कोशिश रही है गली पे। This is ROB award. उसके पैर के नीचे ROB is getting it live from Delhi. उससे नीचे तो ना। The last manifesto of the party had women under the category of the weaker section of society. This time, I don't want to see that. Excellent. That's one we want to put. सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि कंप्लीट ब्रांड ऑफ एसिड ये मिलना ही नहीं। I personally don't think we are going to change this country by using anger or by using hatred. Or by using hatred. ऐसा कानून लाएं कि जैसे सारे प्रदेशों ने किया है तो ये सारे प्रदेश एक ही तरीके का मानदेय हम आंगनवाड़ियों के लिए लागू करें। 50% महिला को हम प्रगति नहीं देंगे, अगर उनको हम शक्ति नहीं देंगे तब तक ना प्रदेश आगे जा सकता है ना देश आगे जा सकता है। That Bodoland, we are having 12.19% of the total population of the state, but from the inception till today, we are giving only 3%. All these councils should be brought under the 6th schedule to the Constitution. I believe that the more power we give to the people of our country, the better it is for the country. जो ओपीडीज जो है वो महिलाओं के लिए सेपरेट रहे। मैं चाहता हूं आज से अगर कांग्रेस पार्टी के आप मुख्यमंत्री को देखें आज से 5, 7, 10 साल बाद 50% महिला। मेरा कहना यह है कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से हम लोग को अलग करके फिशरीज मिनिस्ट्री बनाइए ताकि हमारी योजना हमें सफल होने में मदद हो सके। जोड़ के निवेदन है हम गरीबों को कि आप है ना हमारी कोई सूचना नहीं है, कोई हमारी मजदूरी नहीं है, कोई बच्चों की सुविधा नहीं है, हमारा तो बुरा हाल है। 2009 पे रेट बढ़ा हमारा 40, पहले 25 रुपए था, 25 से 40 रुपए हुआ, अब 40 से अब 2014 हो गई। अब हमारे रेट और कुछ बढ़ा दिए जाए। आपसे ये अनुरोध कर रहे हैं। हिंदुस्तान कोई कुली का काम करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई बढ़ाई का काम करता है, धोबी का काम करता है। ये थोड़ा सा अधिकार चाहते हैं और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या हम कम्युनल फ्री इंडिया देख सकते हैं? क्या इसका पार्ट देख सकते हैं? दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है इल्म और हुनर। भारत हमें डिलीवर करेंगे। कहीं ना कहीं अपने दिल में असुरक्षित महसूस कर जो भी मिनोरिटी का किसी भी स्टेट के अंदर है वो सेफ है, ना उनको निकाला जाएगा। Now I request Sri A.K. Antony ji, Chairman of the Manifesto Committee, to say a few words. Respected Congress President, respected Vice President Rahul ji, Divek ji, Himakan ji,
members of the Congress Working Committee, Sevadal workers and Mahila workers, friends and friends from the media. Today is a great day for all of us. All these years, all political parties followed a particular system in preparing the manifesto. all political parties followed a particular system in preparing the manifesto. Sitting in Delhi, most of the parties used to prepare the manifestos. This time, we have deviated from that past practice. Congress adopted a novel method of preparing the Congress manifesto. This novel pioneering method is possible only because of the determination and guidance by our respected Congress Vice President Rahul Ji. The day one on the preparation of the manifesto onwards, she was particular. 2014 manifesto must reflect, it must truly reflect the voice, aspirations of the Indian people all over country. And this manifesto must bring out a new vision for India. With this end in view, we have organized series of consultations all over India. Nearly 5 months took place to prepare this manifesto. And one glad thing is, in most of the interactions held in various places of India, far-flung areas, Rahul Ji personally attended, interacted hours together with core sections of our society. That's why this time I'm happy to tell our manifesto is really a novel, new manifesto. I'm happy we are able to include many of the important suggestions we got from the interactions. But at the same time, I feel sorry because even though now we included many of the suggestions, this manifesto itself is sort of the lengthiest manifesto. So we are not able to include all the suggestions given by various core sections of the people. We will find some other mechanism to bring out all these suggestions before the people. I am sure the Indian people, cutting across caste, creed, regions, this time will vastly approve this manifesto, and I am sure this will strengthen the Indian National Congress. We will be able to come back again under UPA. Thank you very much once again. Thank you. अब मैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं कि वे कुछ शब्द कहें। Congress President Sonia Gandhi ji, Prime Minister Manmohan Singh ji, Shri A.K. Antony ji, Janardhan Dwivedi ji, Ajay Makhan ji, senior leaders of the Congress Party, friends, members of the press, I'd like to welcome all of you here today. Some 5 months ago,
the Congress Party decided to make its manifesto in a completely different way. We decided that instead of making the manifesto in closed rooms, we were going to take the discussion to the people of India, and we would ask the people of India what they thought. You saw in the movie mainly interactions with me, but in fact, there were many, many, many interactions with young leaders of the Congress Party, with senior leaders of the Congress Party, and the common man, business, poor people, coolies, laborers, women, and we asked all of them what they would like to put in this manifesto. So the manifesto that we have here is truly the voice of the people of this country. We had a manifesto in 2009, and I'm proud to say that 90% of what we had written in that manifesto has been delivered by the UPA government and the Prime Minister. And we commit to doing exactly the same with the 2014 manifesto. So I'd like to say a little bit about what the Congress Party stands for that is different than our opponents. We believe that for this country to grow, there needs to be a firm partnership between business, between the economic sectors of this country, and between the poor. We believe that you cannot grow this country by neglecting either business or neglecting the poor people. And the best party, the best ideology to do this is the Congress Party. I'd like to say a little bit in Hindi for the people I spoke to. आपके साथ बहुत लंबी बातचीत हुई हमारी और आपने हमें बहुत अच्छे सुझाव दिए। दिल्ली के रेलवे स्टेशन में हमारे कुली भाइयों ने हमें सुझाव दिए, महाराष्ट्र में मच्छी मारों ने हमें सुझाव दिए, महिलाओं ने, आदिवासियों ने, सबने हमें सुझाव दिए और हमने पहली बार मैनिफेस्टो में गहराई से आपकी आवाज डाली है। मैं आपसे वायदा करना चाहता हूं कि वो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी ने आपके पैरों के नीचे एक अधिकार का फर्श डाला है। उस फर्श को हम और गहरा करेंगे और मजबूत करेंगे कि आपको भी लगे कि हिंदुस्तान में आपके लिए जगह है, आपकी प्रगति के लिए जगह है। और जो हमारे बिजनेस के लोग हैं जिनकी राय भी इस मैनिफेस्टो में है, आपसे कहना चाहता हूं कि आपके लिए हम ईज ऑफ बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और आपको तेजी से प्रगति लाने के लिए हम पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद। अब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से अनुरोध है कि वे कुछ बात कहें।